सर ये अगला है, इसको कंफ्यूज ना करें इसके साथ। ये अगली बात है। इस ट्रांसफर एप्लीकेशन पे यही ऑर्डर है। ट्रांसफर एप्लीकेशन को नंबर तो लगा हुआ है 127T। उसी का ऑर्डर है ना, कॉपी कहीं नहीं है। वो कॉपी है ही नहीं। और अगली बात मैं बताता हूँ ना जी, एक तो ये आपने नोट कर लिया कि the state has made Zulfikar Bhutto and others responded. They were responded, but no notice. No notice. And the more interesting point is that this application could not be filed before 12th, when the challan was submitted. Before that, it could not be filed. Malik Sahib, this order was pending before any higher forum? Madam, I have not been able to get hold of any petition before the Supreme Court, but it is for likes up whether there was a challenge or not. I think it was not. But then there was a petition filed by late Zulfikar Bhutto before the High Court wherein this issue was raised, and that order is very interesting which has been passed. But these are, whatever I am saying is undisputed. Undisputed that this is the order, no ground, no contention, and no conclusion, and no notice. No notice. In spite of the fact that they were respondent, and the state was conscious, prosecution was conscious that they people are relevant, so they were. The responsibility of the court. Yes, of course it is a responsibility of the court. And when just I was submitting, sir, that before 12th this application could not be filed because under section 526 only a case pending before the court can be transferred. ये पॉसिबल है तेरा कोई फाइल हुई हो जब ये बिल्कुल मुझे नहीं, आई एम सॉरी, मैंने तो जरा सेफ साइड पे रहा हूँ। तो ये कहाँ पे पेंडिंग था जो यहाँ पे ट्रांसफर हो गया? ये मैजिस्ट्रेट के पास पेंडिंग था ना जी, मैजिस्ट्रेट से चला गया सेशन जज के पास उसी दिन। 12 को चालान सबमिट हुआ, 12 को मैजिस्ट्रेट ने 190 सबसेक्शन 2 उसके तहत उसने सेशन जज को भेजा, और सेशन जज ने उस पे एक ऑर्डर किया, अपने पीपी से कहा कि रिपोर्ट दो। अभी वो रिपोर्ट आई या नहीं आई, वो रिपोर्ट वैसे पड़ी है फाइल पे, मगर वो पिटीशन होगी हाई कोर्ट को। माय लॉर्ड हैज वेरी राइटली पॉइंटेड आउट कि दिस माइट हैव बीन फाइल्ड ऑन 13th, बट एट द मोस्ट if we give allowance to the prosecution, it could not be filed before 12th of September, because before 12th of September, nothing was pending in any court. And when I will read 526, that too is very relevant, you can transfer a case from a court. You cannot transfer investigation to the court. So, no notice. आप कहते हैं कि सेशन जज ने कॉग्निजेंस अभी तक नहीं लिया, केस उनके पास नहीं था। नहीं, उनके पास तो था, चला गया ना जी, कॉग्निजेंस की कंडीशन नहीं है, वो मकसद ये फ्रॉम ए कोर्ट ऑब्वियसली। और आगे वो भी मलिक साहब ये जो है कि इट शैल बी हर्ड बाय द फुल बेंच। अब ये तो जनाब आप देखेंगे कि क्या ये सुमोटो ट्रांसफर है। No, sir, please. This is not suo-moto. There was a petition. Trial will be conducted. But when there is no petition on the record, but sir, then we can only assume it's suo-moto. No, because number is there. So, by all fairness, since I am here to assist this court, I will not say. Who is the petitioner? Petitioner is a state, sir, prosecution. See, why would you assume it's the petitioner? Why not the complainant? Why not the accused? Why not anybody else? Sir, the state versus so and so. Yeah, पढ़ा नहीं इसका title. But it may be because every criminal case is the state versus. Yes. So I don't know. They don't even mention who the petitioner is. No, sir, no. The state is a petitioner because in every criminal case it is the state, because state is responsible for your life, liberty, property, etc. State is the custodian. So as in England, the prosecutor is the crown. Yeah, I'm just taking a charitable view of the matter. If it was suo moto,
maybe the court could have done, I don't know. But if it was a state, then notice was absolutely essential to the accused and the complainant. सर मैं Maybe the complainant didn't want to उस पे transfer. आऊंगा कि उसका जवाब जो दिया है ना हाई कोर्ट ने, अब मैं इतने पेन में आ गया उसको पढ़ के कि जब उन्होंने कहा कि हमें नोटिस देने की जरूरत ही नहीं है. अच्छा, they admitted. Yes, वो मैं Any application is available on record? तो सर नो No application. पता नहीं अब बाकी लोगों की क्या राय नहीं, है. अगर आप ये बात अभी भी कर दें, ये जो आपने कहा जो हाई कोर्ट में जो सर मैं करूंगा मगर मुझे जरा चलने दें, मैंने बड़ी मेहनत की है, मुझे बड़ी सालों के बाद we appreciate that. मैं चाहता हूं कि मैं आगे उस वक्त चलूं जब आप तमाम लोग जो हैं वो क्लैरिटी में आ जाएं कि जो मैं कह रहा हूं मैं कह सका हूं और मैं समझा भी सका हूं. अब मैं क्योंकि डिफरेंट है ना जी, मैं जल्दी नहीं समझता, जनाब बहुत क्विक हैं, आप जल्दी समझते हैं, मेरा प्रॉब्लम है तो मेरे साथ वाले भी होंगे. अच्छा, थोड़ा सा आपको ये अंदाजा होगा मलिक साहब, थोड़ा सा अंदाजा जब आप यहाँ थे और वहाँ वकील की क्या हालत होती होगी. अच्छा, आपका अंदाजा नहीं कोई वैसी बात नहीं, बट आई एम वेरी कंफर्टेबल सर, वेरी कंफर्टेबल, कोई ऐसा मसला नहीं है. मैं तो हूँ, मैं तो आई विल वेलकम योर क्वेश्चंस, आई विल वेलकम योर क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन. चार्ज का नहीं No, I think, सर ये चार्ज तो अगली स्टेज आनी है ना, अभी तो चार्ज कहाँ से आ गया, अभी तो केस आया है. जो आपने ट्रांसफर के बाद जो डेट पड़ी है हाई कोर्ट की, उन्होंने डायरेक्ट एविडेंस के लिए रखा है. सर वो मैं आऊंगा ना जी, उस पे मैं आऊंगा. चलें. Let us not. नहीं करें सर, कोई बात. अच्छा, अब ये मैं सबमिशन ये करूंगा कि इससे पहले कि मैं इस पे अपनी सबमिशंस करूं इस पॉइंट पे कि क्या हुआ, ट्रांसफर एप्लीकेशन कैसे होती है, क्या नहीं हो सकता, वो भुट्टो साहब की जो एप्लीकेशन कौन से पेज पे है, ये फर्स्ट कोई रेफर कर लेना बेटा, वॉल्यूम 10 है सर, वॉल्यूम 10. ये मौलवी मुश्ताक साहब क्या सेशन जज से एलिवेट हुए थे या लॉयर से? नहीं सर, लॉयर थे एंड ही वाज एलिवेटेड इन 1960. He was acting. Who was the Chief Justice? सर वो मार्शल लॉ के बाद एक्टिंग का उन्होंने ओथ लिया पहले, फिर उन्होंने परमानेंट का भी लिया, वो भी मैं अगर इजाजत. कौन सी वॉल्यूम? ये अभी मैं रेफर कर रहा हूँ वॉल्यूम 10 को. वॉल्यूम 10 सर. वॉल्यूम किशमिश. पेज कौन सा, ये पिटीशन है नहीं, पेज कौन सा है? अच्छा, पेज 19 पिटीशन का. अच्छा, पेज 19 सर, वॉल्यूम 10 सर, 19 सर. अब क्योंकि मैंने कहा ना कि मैं, आपने कहा कि यही बता दें उन्होंने क्या इसका ऑर्डर लिखा है, मैं इसलिए इसको सर पेज 19 वॉल्यूम 10 मिल गया सर? मिल गया, मिल रहा है जी. बाकी सब सर्विस पूरी तरह नहीं है सब जगह. On behalf of जी सर, ये एप्लीकेशन है क्रिमिनल ओरिजिनल के ऊपर है नंबर, मिसलेनियस नंबर, ये क्रिमिनल मिसलेनियस है 933 M of 1977. Sir, this was filed on 5/10/77. So important is this was before framing of the charge. This was before framing of the charge. So this is in re the state versus the complainant, Mr. Zulfikar Ali Bhutto accused. It is on behalf of Mr. Zulfikar Ali Bhutto accused in the above mentioned case. It is respectfully submitted. ये पहला पैरा मैं छोड़ देता हूँ. This is political. मैं जनाब को अगले पेज पे ले जाता हूँ. ये पेज 2 पे सर, जिसपे वो बायस की बात उन्होंने की है. पढ़ूं सर? पेज 2 ग्राउंड 3, पेज 2 इस पिटीशन का. जी पढ़िए. Page 2 ground 3, the apprehension of the petitioner about the partiality and prejudice of Mr. Justice Mushtaq Hussain is further enhanced by his order transferring the above caption case from the lower court to the high court on the day the petitioner was enlarged on bail. Mr. Justice K.M. Samdani, before a complete challan was even submitted to the subordinate court concerned. ये उन्होंने ये ग्राउंड ली है. अब ये एक्टिंग चीफ अगला है 4, that against the order passed Mr. Justice Mushtaq Hussain as acting chief justice constituting a special bench of 5 judges presided over by him for the trial of the challan case when the private complaint, अब वो जिक्र आ गया जनाब का,
My Lord Justice Tariq Masood was asking. 5 judges presided over by him for the trial of the Challan case when the private complaint with regard to the same matter was being inquired into by a division bench of the High Court caused grave apprehension about getting a fair trial. It is submitted that on that date even complete challan has not been filed, but yet 24 September was fixed for hearing of the case. That the withdrawal of the challan case from the lower court without hearing the petitioner, now he is agitating, without hearing the petitioner has caused prejudice to him and deprived him of his right of appeal revision to the High Court. تو سے یہ اعتراض جو پوچھ رہے تھے جناب پچھلی ڈیٹوں پہ یہ اعتراض ہوا اور اس کا آرڈر بھی ہوا. اب وہ آرڈر دیکھ لیتے ہیں. ملا ایسے نہیں مل رہا کہاں سے پارٹ کون سا ہے پارٹ 9 ہے. اچھا سر یہ آپ کا اب پارٹ 9 ہے والیوم کی بجائے کسی جگہ پہ یہ پارٹ ہے کسی جگہ پہ والیوم ہے جی یہ مل گیا ہے سب کو جی مل گیا جی سر پیج اس کا 35 ہے یہاں سے یہ آرڈر شروع ہو رہا ہے جی یہ اس کا آرڈر تو بڑا لمبا ہے میں اس کو سکپ کروں گا 55 پہ کون سا ہے 40. اچھا جناب اس سے پہلے ذرا میں پیرا پڑھ دوں پیرا 14 جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سب نے پی سی او کا اوتھ اٹھایا ہے سپریم کورٹ سے بھی پی سی او کا اوتھ اٹھایا ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اسی آرڈر کا ہاں اسی آرڈر میں لکھا ہے ایٹ پیج 43 سر پیج 43 پیرا 14 والیوم بفور یو کم ٹو اٹ یہ اگر آپ ٹائٹل دیکھیے پیج 35 پہ اس میں 2 اپلیکیشنز کا دو ہیں دوسری بھی ہے دوسری کون سی ہے 933 تو وہ والی ہے 933 میں انہوں نے وہ ریکیوزل والی ہے ہاں وہ کوئی اور دوسری والی کون سی ہے یہ ایک تو یہ ہے نا جس میں انہوں نے ان کا پریجوڈس اور دوسری کون دوسری میں کیا ایشو تھا ہاں وہ تھا کہ ایکٹنگ چیف جسٹس جو ہے وہ ہائی کورٹ کو وہ نہیں کنٹرول کر سکتا دے شوڈ بی پرماننٹ چیف جسٹس مگر وہ کوئی اتنی امپورٹنٹ نہیں یہ اس ریفرنس سے یہ ٹرانسفر کے میں اس لیے اس کو اسکپ کر رہا ہوں مگر یہ بڑا انٹرسٹنگ پیرا ہے جو میں پڑھنا چاہتا ہوں جی پڑھیے پیج بتائیں جی پیج 43 سر پارٹ میلوٹ پارٹ 9 وہ ایک سے ذرا آ رہا ہے پارٹ آ رہا ہے بڑا اسکیٹرڈ ہوا ہے سر کوئی ادھر آرڈر ہے کوئی جب تک پڑھتے ہیں باقی جناب نہیں وہ آپ پڑھیں گے تو ہم سن لیں گے نہ بھی آئے یہ سب کے پاس ہے جی جی پلیز اسٹارٹ سب کے پاس نہیں پڑھتے تو ہم سنتے رہتے ہیں نا جب تک آ جائے گی I have no objection sir آپ صحیح پڑھیں گے I will obey every command of نہیں جی پلیز sir the next challenge is to the oath subscribed to by the acting Chief Justice at the time of assumption of his office. The only objection is that the acting Chief Justice did not subscribe to the oath as required under Article 194 of the Constitution. This objection cannot be sustained in view of the High Court Judge's Oath of Office Order 1977 within bracket President's Order Post Proclamation number so and so. The oath of office prescribed therein is administered to the acting Chief Justice under Clause 5 of the High Court Appointment of Acting Chief Justice Order 77. A similar oath is required to be administered to all the judges of the Supreme Court by virtue of Supreme Court Oath Order 77 enforced on the 22nd of September 77. All the judges of Supreme Court, including His Lordship Chief Justice, have already subscribed to such an oath. The argument of learned counsel, if allowed to prevail, will be chaotic for the administration of justice in the country, since it will lead to the result that there is no superior court in Pakistan. It's a very good explanation for taking oath under PCO.
But there was no. But probably the judges realized that there was no superior court in Pakistan. नहीं वो पता नहीं अब क्या कहते हैं, मुझे तो उनका यही समझ आया कि वो कहते हैं कि हमने ओथ ना लिया तो जज ही कोई नहीं, कोर्ट ही कोई ना। बड़ी बात है वैसे। बहरहाल एनीवेज, अब दूसरा दिखाओ, दूसरा पेज 55। नहीं मतलब मेरिट्स पे बताएं। मैं उसी पे आ रहा हूँ सर, ये तो मैंने सिर्फ आपको बताया, आपने कहा था कि वो दूसरी एप्लीकेशन क्या है। It's a good history lesson. बहुत अच्छा। If nothing else. मलिक साहब ये बताएं कि ये हाई कोर्ट ने कौन सी जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज की? और किस केस में? इसी में ट्रांसफर में सर 526 अभी तो मैं पढ़ना है उसको अभी, क्योंकि मैं वो आई एम ओबेइंग द डायरेक्शन, वो मैं उसको पढ़ूंगा। साथ ही फिर ये भी बता दें बाद में क्वेश्चन करने से, स्टेट मस्ट बी थ्रू समबडी। स्टेट का मतलब सर यही होता है कि जैसे हम बेल पिटिशन फाइल करते हैं ना, हम अपील फाइल करते हैं, somebody is convicted, so that is ABC versus state। तो नहीं वो नहीं, वो लिखें ना लिखें, इतना है बात जगहों पे शायद है ऐसा, बट वो स्टेट का मतलब ही यही है कि वो प्रोसिक्यूशन है, वो कोई इतना सीरियस बात नहीं। अब मैं 35 दो ही। अब आप मेरिट वाली बात बताएं, वो मेरिट वाली बात कैसे डील कर रहे हैं? चलना मेरिट पे। अब इसमें सर प्राइवेट कंप्लेंट का भी जिक्र आ जाएगा, नोटिस क्यों नहीं हुआ वो भी आ जाएगा, ताकि दोनों चीजें जो आपने पूछी हैं वो क्लियर हो जाएंगी। सर पेज 55 सर, पार्ट 9 के 31 ये पार्ट है जी 9 जी, 55 पेज पे जी, 55 पेज पे पैरा सर इसका है 31 जी। एक कंप्लेंट, यही टिश्यू देना, एक कंप्लेंट अगेंस्ट 55 against Mr. Z. Bhutto and 19 other accused person under section 120B 119। नहीं skip this। हाँ जी सर ये बड़ा जरूरी है सर, अच्छा ये थोड़ा प्लीज इसको देख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। मैंने तो पढ़ लिया जी, कुछ खास बात है तो बताएं। सर अगर इजाजत दे तो मैं पढ़ लूँ तो फिर बता दूं तो ज्यादा बताइए। सुन ले सर, कुछ नहीं होता सर, बड़ा जरूरी है। आई एम इन अ वेरी डिफिकल्ट पोजीशन ऑफ ट्राइंग टू get things completed also। ये बस नहीं हो जाएगा सर, देखिए वो उससे बेहतर है कि वो, अगर मैं ड्यू रिस्पेक्ट में कहूंगा कि अगर जल्दी में कोई चीज रह गई तो फिर वो सारी जिंदगी का मसला है। जैसे तो आप इसको सुन लें, मैं तैयार हूँ, आप रात 12 बजे तक मुझे रखें, मैं तैयार हूँ। अच्छा, मैं 12 बजे तक भी बहस करने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई इशू नहीं। एक कंप्लेंट सर मैं पढ़ा था अंडर सेक्शन, में स्किप कर देता हूँ, was filed before a magistrate at Lahore by Mr. Iftikhar Ahmed Tari, the complainant against the appellant so and so। अब मैं इसमें वो आ जाता हूँ जो कंप्लेंट इन्होंने की है। मियां अहमद तारी ये कौन आ गया? ये कोई दूसरे थे जी, ये बेटा ये है द कंप्लेंट ऑफ अहमद रजा कसूरी, पैरा 32 जी। बड़ा करना was referred to a division bench consisting of Mr. K. M. Samdani J and Mazrul Haq J। अब यहां मैं पॉज करूंगा और मैं सबमिट करूंगा कि वाई नोट this was not issued to the accused. Had it been issued, they could say, कि, sir, if you want to transfer this case, so send it to the case where the complaint regarding the same incident is pending. So that was avoided because those two honorable judges, I believe the acting Chief Justice was not inclined to include them in the bench. So that is it. अब इसको आप क्या कहेंगे? बायस कहेंगे, टैक्ट कहेंगे, क्लेवरनेस कहेंगे, आप क्या कहेंगे? मैं कुछ नहीं कहूंगा। अब आप इसको
کچھ کہتے ہیں آپ. سو میں کہتا ہوں دس از اے کلیور موو. جی سر. یہ کلیور چیز ہے نا جی, یہ باعث سے آگے بات ہے. باعث تو ایک چیز ہے نا, آپ کا ایک ویکٹ ہے کچھ اسکپ کر گئے, یہ تو آپ کس طرح کر رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں وائلیشن آف ڈیو پروسیس ہے. وائلیشن بھی نہیں ہے. وائلیشن تو بڑی چیزیں ہوتی ہیں کہ مجھے کاپی چاہیے, مجھے نہیں ملی, مجھے یہ ہونا چاہیے تھا نہیں ہوا. یہ وائلیشن نہیں ہے کہ یہ ایک goes to the root of a fair trial. ہاں بالکل. یہ آپ نے ایک کلیور لیا, بیکاز آئی کین ناؤ ریڈ دا مائنڈ آف دا جج ایز ویل, کہ وہ اگر نوٹس کیا گیا سو obviously the accused side will argue کہ sir the private complaint is pending before a 2-member bench. Refer this 2-member bench, and in that 2-member bench one has already allowed bail to Mr. Zulfikar Ali Bhutto. وہ کمپلینٹ کیوں 2 ممبر بینچ کے پاس ڈالا؟ اب پتہ نہیں وہ اس وقت چلی گئی ہوگی, پتہ نہیں چلا ہوگا, یہاں کوئی بات ابھی تک صحیح نہیں ہوئی ہوگی, میں اس پہ کچھ تبصرہ نہیں کرتا. میں تو وہ باتیں کر رہا ہوں جو فیکٹ ہیں. اس میں ایک جج نے بیل دے دی نا. نہیں, یہ کمپلینٹ میجسٹریٹ کے پاس نہیں جاتی, وہیں تھی نا جی پینڈنگ. یہ تو ہائی کورٹ کے سر وہ ٹرانسفر ہوگی نا. نو 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 ابھی ٹرانسفر نہیں ہوئی. نہیں سر ہو گئی ہے. آپ ایسا کریے کہ 56 پیج کے اوپر سے چوتھی لائن پڑھیے, ابھی کلیئر ہو جائے گا کہ وہ کمپلینٹ جو احمد قصوری انہوں نے دائر کی تھی وہ کہاں گئی. یہ پڑھیں. سملرلی ایک کمپلینٹ وہی ہے. ہاں یہ پڑھیں یہاں سے. ہاں میں سر وہ جلدی میں آتا ہوں نا تو پھر میرے لیے پرابلم ہو جائے. ابھی کلیئر ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے آپ نے, میں نے سارا پڑھنا تھا, مجھے ڈائریکشن آ جاتی ہے. ہاں پڑھیں. سملرلی یہ سر چوتھی لائن پیرا 56 سے, similarly a complaint case filed by Ahmad Raza Kasuri in regard to the murder of his father Nawab Muhammad Ahmad Khan was transferred this court by order dated 15th of August 1977. پہلے ہی ہو گئی تھی یہ پہلے, یہ تو میں کہہ رہا ہوں کمپلینٹ پہلے ٹرانسفر ہو چکی ہے نا. اسی لیے جو میں نے جو آرگومنٹ جناب کو دیا کہ موو کیا تھی, کرنا کیا تھا, کیونکہ اس 2 ممبر بینچ میں سے ون آنریبل جج جسٹس سمدانی الاؤڈ بیل ٹو ذوالفقار علی بھٹو ان دا اسٹیٹ کیس. آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ پہلا ان کا موو یہ تھا کہ ہم یہ کمپلینٹ آئے میجسٹریٹ سے ہائی کورٹ آ جائے. آ گئی. ڈیورنگ دیٹ پروسیس ان کو بیل مل گئی. جب بیل مل گئی دے سیڈ اوکے لیٹس ٹرائی another thing. ان نے پھر ایک اور موو کیا اور ان نے جو مین کیس تھا اس کو ٹرانسفر کیا نوٹس کے بغیر. ٹھیک سمجھ آ گئی نا جی بات, ویری کلیئر. اور یہ بھی بتا دیں کیا میجسٹریٹ سے وہاں ہائی کورٹ ٹرانسفر ہو سکتا تھا؟ یہ بھی آپ نے اب یہ بالکل ہو سکتا ہے سر. اب اس پہ لیکن ایک بات اور کلیئر بھی ہو گئی نا جی سر, کہ ایٹ لیسٹ ٹرائل کورٹ کے نوٹس میں تھا کہ ایک کمپلینٹ یہاں پڑی ہے اور نورلائی کیس کے تحت اس کو ساتھ چلنا چاہیے. نہیں مگر سر وہ تو دیکھیں نا, اب میجسٹریٹ تو یہ آرڈر نہیں کر سکتا نا کہ اس کو ٹرانسفر کر دیں. ہائی کورٹ کے پاس نہیں, ہائی کورٹ کے پاس ہے نا جی, مگر وہ دوسرا چالان جب آیا میجسٹریٹ کے پاس, اس کے پاس تو ہی ہیڈ نو آپشن ایکسپٹ ٹو سینڈ اٹ ٹو دی کورٹ آف سیشن. وہ تو انڈر دا لا ہی کین ناٹ لک ایٹ دس کمپلینٹ. اب مائی لارڈ جسٹس یحییٰ ہیز ویری ایپٹلی سمرائزڈ دا سچویشن, اینڈ آئی تھنک ہی از فلی انڈرسٹوڈ کہ what was the move, though it was clever move. What was the intention? No, since your lordship is looking for malice
Yes. for touching the merits of the case. So step by step your lordship will feel that malice is not clear, but it is floating on the surface of the record. In every respect. ट्रांसफर हुई थी विदाउट नोटिस, कंप्लेंट भी विदाउट नोटिस. कंप्लेंट तो सर कंप्लेंट में तो क्योंकि कंप्लेंट में उस वक्त तक एक्यूज हैज नॉट बीन समन्ड, उसमें तो वो अभी 202 की इंक्वायरी नहीं हुई ना, तो वो तो था ही कोई नहीं. वो हो गई अगस्त में ट्रांसफर हो गई, उसमें मेन कॉग्निजेंस लेने से पहले ट्रांसफर हो गई. जी कॉग्निजेंस तो नहीं ली ना जी, उन्होंने तो अभी कुछ भी नहीं किया. मगर वो अब उसको अगर आप इंटरप्रेट करेंगे 526 को अभी पढ़ेंगे हम, क्योंकि उसमें तो और बहुत बातें करनी है. इस पॉइंट पे बहुत आर्गुमेंट्स है. ये केस ट्रांसफर हो ही नहीं सकता. फर्स्ट स्टेप में तो मजिस्ट्रेट ने सेशन जज को भिजवाना था, वहां से फिर हाईकोर्ट जाना था. स्टेप जी तो अभी उसी के पास थी ना वो कंप्लेंट, उसमें बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं. बहरहाल ये रिकॉर्ड यही कह रहा है इंक्वायरी के बाद फिर आगे कहानी होगी. वो कंप्लेंट जो है रिकॉर्ड पे नहीं है कसूरी साहब वाली. वो मैंने लेटर भी लिखा था आपके ऑफिस को, उन्होंने मुझे कुछ 10 कॉपियां भेज दी, सारी एक एक सफ़ा देखा. वो कोई तारी साहब की कंप्लेंट है, कोई किसी और की कंप्लेंट है. जो कसूरी साहब ने फाइल की थी वो रिकॉर्ड पे नहीं है, और उस कंप्लेंट पे हाई कोर्ट के क्या ऑर्डर हुए वो भी रिकॉर्ड पे. अब तो मेरे पास जो कुछ है मैं तो आपको उससे भी असिस्ट कर रहा हूं कि जनाब ये स्टेट ऑफ अफेयर है. इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये एक एक स्टेप जरूरी है, एक एक स्टेप जरूरी है. अगर जनाब चाहते हैं कि आपके सामने पिक्चर क्लियर हो जाए तो ये इसमें बहुत जरूरी है कि इस चीजों को देखा जाए. सर अब मैं पढ़ूं सर. By the order of so and so, another complaint, Sayyid Zafar Hussain Shah versus Zulfikar Ali Bhutto, ये भी कोई और है, इसको मैं छोड़ देता हूँ. The complaint of Ahmed Raza Kasuri was referred to a division bench during the pendency of this complaint. Now this is relevant, sir. Para 33. The police filed an incomplete challan before a magistrate on 11th of September. ये 12th को है, उन्होंने 11th लिख दिया. The magistrate acting under section 193 of Code of Criminal Procedure, हालांकि एक्ट उसने 190 में किया, ये जज साहब ने 193 लिख दिया. The same day to the court of session, the state filed an application for transfer of this case to the original site of the High Court, which came up for hearing on the morning of 13th of September 1977. The acting Chief Justice passed an order of transfer and constituted a larger bench of 5 judges for hearing the matter, obviously on the same ground on which number of other cases against Mr. Bhutto and other has been transferred. अब वो कौन सी ground है? We don't know. Nothing is on the record. उन्होंने कहा कि वो भी हुए थे तो ये भी कर दी. अब जनाब इसका 34 का मैं पढ़ूंगा, क्या पूरा तो मैं नहीं पढ़ा, मैं ऊपर से 7-8 लाइनें छोड़ के नीचे जहां पे 10:30 AM लिखा है ना जी, एक लाइन में 10:30 AM, मैं इससे आगे पढ़ूंगा. There is nothing singular or strange in the order of transfer which was considered expedient in the interest of justice, as Mr. Bhutto, who had held some highest office in the country, was an accused. In view of the importance of trial, the constitution of a larger bench of 5 judges was considered necessary. The constitution of such a bench should inspire more confidence. अब ये मुल्ज़म को भी ये एडवाइस दी जा रही है कि 5 जजों पे इत्मीनान ज्यादा करो. To the more confidence rather than create an apprehension in the mind of any property. The apprehension of the petitioner's partiality and prejudice of acting Chief Justice on this ground is not at all reasonable. And another ground, वो पढ़ देना. हाँ ये सर, अब मैं सर बाकी अभी स्किप कर रहा हूँ. पेज 63 जिसमें ये ट्रांसफर के बारे में बात आ रही है. पेज 63 सर, पैरा 42. बड़ा ही इंटरेस्टिंग है सर, बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा पेनफुल है, बड़ा पेनफुल है पर्सनली फॉर मी सर. An other ground is that the order of transfer has been passed without notice to the accused petitioner. No such notice was required in the present case. अब आप ये बता, मैं नहीं, I can't comprehend sir.
कि 5 judges of the High Court, headed by the Chief Justice, who by that time was judge for the last 15 years, they are writing no notice was required. और इससे painful बात अगली है. Under section 526(6) provide for a notice to the public prosecutor on the application of accused person for transfer of a criminal case. अब जनाब यहाँ पे मैं जरा 526 का 6 पढ़ दूंगा ताकि जनाब को पता चले फिर कि क्या हुआ है. जनाब आप वो जो कर रहे हैं ना कि मूव क्या मूव है, अब यहाँ से क्लियर होती है. ये जनाब 526 subsection 6 है. पढ़ूं सर जी. Notice to public prosecutor of application under this section. Every accused person making any such application shall give to the public prosecutor notice in writing of the application together with a copy of grounds on which it is made, and no order shall be made on the merits of the application unless at least 24 hours have elapsed between giving of notice and hearing of application. इस नोटिस को उन्होंने बना दिया. अब जरा देखें अब इसको जनाब क्या कहेंगे. Ignorance. If it is ignorance. Ignorance of all the 5 judges. No. नहीं, क्या कह रहे हैं कि नोटिस सिर्फ प्रोसिक्यूटर को होगा. प्रोसिक्यूटर को नोटिस है एक्यूज की तरफ से. जिस तरह जनाब की कोर्ट में है कि जब आप चैलेंज करते हैं तो वो एक कॉपी भेजते हैं ना. अब इससे बड़ी आई डोंट वांट टू यूज दिस वर्ड बट बदयांती क्या होगी. What is mentioned if the state applies for the transfer? If the state applies for the... Yes, वो कहते हैं जरूरत नहीं है. क्यों? नोटिस तो ये तो कोर्ट से रिलेटेड ही नहीं है, ये तो एक्यूज से रिलेटेड है कि अगर वो करेगा तो वो नोटिस देगा. वो कहते हैं क्योंकि स्टेट को नोटिस होना जरूरी है, एक्यूज को नोटिस. मलिक साहब ये तो आप इस पे आ गए ना, मगर ग्राउंड्स ऑफ ट्रांसफर जो हैं वो कहाँ है? वो 526 में दिए गए 1 2 3 4 5. सर मैं आऊंगा तो उनका तो तस्करा है ही मैं नहीं. आऊंगा. मैं तो आपको देखे, मैं तो इसीलिए कह रहा था कि ये जो चीज है ये टाइम कंज्यूमिंग है बट जरूरी बड़ी है. ये स्टेप बाय स्टेप. Whether for this presidential reference or Yes, not, sir. but good history lesson. Yes sir, बिल्कुल And है. for students of law. बिल्कुल है. मैं कहता As हूँ well as for judges. मैं कहता हूँ कि इसको कंपल्सरी कर दिए. I taught this case at slums for 4 months. For 4 months. मैं तो कहता हूँ इसको कंपल्सरी कर दें कि ये जो भी क्रिमिनल साइड पे प्रैक्टिस करना चाहता है या जिसको भी आप एलिवेट करें वो ये केस पढ़ के आए. वैसे मैं ये सवाल पूछता था अक्सर वो जब मैं ASCs को एनरोल कर रहा था, खास तौर से जो क्रिमिनल केसेस करते हैं कि आपने जजमेंट पढ़ा है ये वाला, और शायद ही किसी ने पढ़ा होता था. नहीं वो किसी सर केस को एक और मैं रिक्वेस्ट करूं यहाँ पे. केस अगर आपने क्रिमिनल केस को समझना है तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की जज से आप जजमेंट से कुछ नहीं पता चलेगा, बिकॉज दैट इज द कंक्लूजन. आप रिकॉर्ड देखें, आप एविडेंस देखें, वहां से समझ आती है. अब ये अगर इंटरप्रिटेशन है कि वो कहते हैं कि अगर ये इंटरप्रिटेशन मान ली जाए. अब मैं आ गया जी, आगे बढ़े सर. आगे सब सेक्शन 3 of section 526 read with clause E of section 526(1) authorize the High Court to transfer to it a case either on the application of a party or on its own initiative whenever it is expedient in the interest of justice. These provisions authorize the High Court pass an order without notice. अब इसका क्या करें? तो फिर ये सब कहने की जरूरत भी नहीं थी क्योंकि ट्रांसफर तो केस ऑलरेडी हो चुका है. वो कहने की जरूरत इसलिए थी कि आपके पास एप्लीकेशन आ गई. वो तो एप्लीकेशन 22 पे आ रही है. नहीं इस पे आ रही है ना जी. 2 दरखास्तें मैंने पढ़ी पहले आपको, उसमें ये स्पेसिफिक ग्राउंड है की जानिब से. नहीं सर नहीं, मैं थोड़ा सा केस ट्रांसफर हो गया, उसने एतराज किया without notice to the accused, not 1 but 5 accused. At that time there were 7 accused. Then when it was in the High Court, when this was in the High Court,
An application was filed in the High Court. नहीं, मैं जरा सा कंफ्यूज हूँ. वो जो ऑर्डर आपने जो सबसे पहले पढ़ा था, जरा उस ऑर्डर पे वापस आइए एक सेकंड के लिए. एक नंबर पेज पे जी, वो एक नंबर जी पेज आप फरमाइए. तेरा 9 वाला. जी फरमाइए सर. मैं मेरे जुबानी याद है, आप पूछिए. 76 transferred to 75 No, sir, 75. जरा से मैं टेक्निकल बात कर रहा हूँ. Magistrate is order transferred to this court for trial. No, 75 no, sir, 75 report was prepared. Magistrate order is in 76. So almost a year and a half afterwards. Yes. On whose order was सर मैं इसमें डिटेल सबमिशंस पे आऊंगा. मैं जैसे आप लिखे ना, इस सिर्फ मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ. I'm just following your. बस इसमें सारी चीज है. ठीक. अब उसके बाद ये this investigation as per record which is available before this court started on 24th of July 1977. But surprisingly the record suggests that the record from the concerned police station was taken on 8th of August 1977. An investigation started before taking the record from the concerned police station. And then the more interesting point is that there is nothing on the record, no application to the magistrate for permission for reinvestigation or for requesting for withdrawal of that order or to modify that order or to set aside that. No application was submitted to the magistrate. And most important, the important point is that there is no written order. This is the answer of the query your lordship has posed. No order, written order is on the file regarding reinvestigation. No order. And their most important witness, I will refer when I will go. Is this a legal requirement? Of course, sir. No, can you also, if you assist us on this point? Sir, I will. You will later. Okay, right. A specific question was asked from this investigating officer. He said, I was verbally directed by my officer to you conduct the investigation and there must be some order. We might be lying with that officer. So then it is a different story. Then, sir, incomplete challan was prepared on 11th of September 1977, submitted before the court of the learned magistrate on 12th of September 1977. And in the interim challan, there were 7 accused. Their names are mentioned at page 3 of my note. Number 1, Zulfikar Ali Bhutto. Number 2, Sheikh Masood Ahmed. Number 3, Mia Muhammad Abbas. Number 4, Ghulam Hussain. Number 5, Ghulam Mustafa. 6, Arshad Iqbal. 7, Iftikhar Ahmed. Then the order of the magistrate, on the same day the magistrate passed an order on the incomplete challan and the matter went to the court of session and that order was also passed on the same date. I will refer to the order. And sir, complete challan was submitted on 18th of September 1977 wherein accused were 5. Masood Mahmood and Ghulam Hussain. Their names were excluded as they became approver in this case. Charge was framed on 11th of October 1977 under section 120B Pakistan Penal Code, 302 PPC read with section 109 and 301 PPC and under section 307 read with section 109 PPC. The prosecution witnesses in total were 41, defense witnesses are 4, none from the side of Mr. Zulfikar Ali Bhutto, and he boycotted the court trial proceeding at a particular date that I will also mention. Then the judgment of the High Court is PLD 1978, Lahore 523. All were convicted under different provisions of law, but they all were sentenced to death. Then their appeal came to this court and it was decided on 6th of February
1979, the reported judgment, PLD 1979, Supreme Court 53, 7-member bench. Initially it was 9-member bench. Yesterday your lordship has been informed as to how the two judges who were initially part of the bench but they did not remain, one because of health, other because of retirement. So the four judges, they dismissed the appeal. Slightly they modified it to the extent of 301, to the extent of certain accused, but they dismissed the appeal and death sentence was maintained. But the three honorable judges, and they allowed the appeal to the extent of Zulfikar Ali Bhutto and Mia Abbas, but to the extent of remaining, their appeal was dismissed. So this is, in brief, is the prosecution case. And now, sir, if you can give one spare, if you have more copies, I would like to give it to the Attorney General and to... दे दिए? Okay, fine. सबको दे दिए. Please proceed, ji. Sir, please. दे दिए. And now, sir, I will read the FIR. Complainant वो भी दे दीजिए, कसूरी साहब को भी दीजिए. दे दी कसूरी साहब. ये ले लीजिए. Sir, the complaint which has been signed by Mr. Ahmad Raza Kasuri, you will find it at page 310 of volume 7. Page... You are referring to the original record now? Which volume? Which volume? Which is before your lordship. आपने दिया है? नहीं सर नहीं, वो मैंने तो इसकी बेटर कॉपी आपको दे रहा हूँ, ये बेटर कॉपी दे रहा हूँ. But the file your lordship wanted to see where the original volume कौन सी? क्या? Volume कौन सी? कंप्लेंट की बुनियाद पे FIR है ना जी. FIR वो इतनी क्लियर नहीं है, वही उसका वो अगर. Where is that? It is, sir, at page 310 volume 7. ये दे दो, ये दे दी. Volume 7. Volume 7. ये सर बड़ा ही इसको बड़े ही मैं I don't have the words to use किस तरह इसको 310. सर वो पढ़ लेना फिर इसमें नहीं है. है सर वॉल्यूम 7. वो वॉल्यूम गलत लिखा होता है ना जी. ये बड़ा रिकॉर्ड जो है ना इसको प्रॉपर्ली इन्होंने बनाया. उर्दू में जो लिखी है जी सर वही है. कॉपी है FIR की इसमें नहीं कॉपी नहीं है सर. मैं आई एम रेफरिंग टू द एप्लीकेशन. ये उर्दू ये वाली ये वाली बिल्कुल यही वाली. हाँ ये पढ़ लें जरा. मैं इसकी बेटर कॉपी दी है ना जी, मैं वो पढ़ूंगा. अच्छा I have supplied the better. 310. So your lordship have got this? 310. जी we got it. Shask मेरे को just. But we don't have the better copy. 301. यार दोनों. Have you given it now? Yes sir, yes. वो better copy दे दें हमें. दूसरी दे दो. ये भी पढ़ी चले सर नहीं वो बड़ी जरूरी है. बेटर कॉपी आप देना. बेटर कॉपी हम पढ़ सकते हैं. क्वाइट क्लियरली रिटन आप पढ़ें. बहुत साफ लिखा है इन्होंने. बेटर कॉपी है सर. किधर है वो दी भी है. अब किसी और को दे दें. सारा काम नहीं कर पा रही हैं तो किसी और को दे दें. एक आदमी उधर आधे इनको दे दें, आधे इनको दे दें. जी बता दें. पढ़ूं जनाब पढ़ूं. बस एक अगर आप बुरा ना माने, मुझे पसंद है लफ्ज लेजिबल कॉपी. बेटर से लगता है कि कोई इम्प्रूवमेंट आ गई होगी. अब वो यही हम यूज ये करते हैं. बट ठीक है आप इसको जी बिस्मिल्लाह. हम ये हमारा जो प्रैक्टिस है उसमें हम. हाँ वो आई नो वो डेवलप हो चुका है मगर हम उसको कोशिश करें. हाँ पढ़िए मूर्खा. जी एक सेकंड सर. वो जस्टिस शाह इज लुकिंग फॉर द कॉपी. जी प्लीज आई एम. गॉट इट सर. जी वही चीज FIR में भी लिखी हुई है. जी बिल्कुल वही है. ये जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस सर. इट इज फॉर योर कन्वीनियंस. जी पढ़ ले. जी सर. मोरखा 17/1/1972 को आज से कबल कसूर में मुझ पर बजरिया फायरिंग कातलाना हमला हुआ और मुझे गोलियां भी लगी, जिसका मुकदमा थाना शहर कसूर में दर्ज है. उसके बाद मोरखा 24/8/1974 को इस्लामाबाद मुझ पर खुदकार आला से हमला हुआ, जिसका मुकदमा भी थाना इस्लामाबाद में दर्ज है, जिनमें मुफस्सल हालात दर्ज है.
परसों 9/11/1974 को मुझे मोहम्मद हनीफ इलेक्ट्रिशियन ट्यूबवेल मॉडल टाउन सोसाइटी ने बताया कि एक यौम कबल 4-5 आदमी मेरे घर का पता दरियाफ्त कर रहे थे और मेरी तलाश कर रहे थे। आज करीब 12:30 बजे रात मैं माँ अपने वालिद नवाबजादा M.A. खान, मेरी वालदा और अपनी खाला मिसिज आगा मोहम्मद महजी अपनी कार नंबरी LEG 9495 पर सैयद बसीर हुसैन शाह की कोठी वाक़या शादमान कॉलोनी की शादी से फारग होकर कोठी से शाह जमाल की जानब जा रहे थे। मेरी कार दाएं हाथ ड्राइव है जिसको मैं खुद चला रहा था। मेरे बाईं तरफ मेरा वालिद नवाबजादा M.A. खान, मेरे अकब में पिछली सीट पर मेरी वालदा और उनकी बाईं जानब पिछली सीट पर मेरी खाला बैठी थी। जब गोल चक्कर के करीब कार आई तो अचानक दाईं तरफ से मेरी गाड़ी पर फायरिंग शुरू हो गई, जो तकरीबन 100 गज तक मेरी गाड़ी पर फायरिंग हुई। चंद एक गोलियां मेरे वालिद को सर पर लगी, उनका काफी खून बहने लगा और कार दाईं तरफ से चलनी हो गई जिसके शीशे टूट गए। मैं अपने वालिद को कार में सीधा अमेरिकन हॉस्पिटल UCH गुलबर्ग ले आया, जहां पर मेरे वालिद फायरिंग के जख्मों की ताब ना लाकर जान बहक हो गए। ये फायरिंग खुद कार आला से की गई जिसमें मेरे वालिद नवाबजादा M.A. खान कत्ल हो गए हैं। ये फायरिंग मुझ पर सियासी वजूहात की बिना पर कराई गई है क्योंकि मैं कौमी असम्बली में हिज़्ब इख्तिलाफ का मेंबर हूँ और तहरीके इस्तिक़लाल का, जो कि मुल्क की सियासत में हुकूमती पार्टी का डटकर मुकाबला कर रही है, मरकजी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ और गवर्नमेंट पर कड़ी तनकीद करता हूँ। याद रहे कि जून 1974 में कौमी असम्बली में मिस्टर भुट्टो ने मुझे मुखातब करके कहा था कि मैं इस शख्स से तंग आ चुका हूँ, ये शख्स मेरी बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। ये अल्फाज कौमी असम्बली के रिकॉर्ड और अखबार में मौजूद हैं। No sir, this FIR, as your lordship have seen, it has 3 parts. Number 1 is the background of the incident, where the complainant says that he was fired at in Kasur in 72 and then Islamabad in 74. Number 2 is the narration of the events. Okay, how did this incident took place? And number 3 is his assessment, his opinion, his guess or his version that why this firing was made and who is responsible for that. These are the 3 portions. So far as first portion is concerned, that doesn't need much comments at this stage, but I will touch it later on. So far as I think who in those 2 FIRs that you mentioned in the first part, yes, is it on the record who was nominated there? I said I tried my best. I could not get copy, but from the record it emerges that Mr. Bhutto was not accused in both those FIR. He was not. There was unknown person? In so far as the FIR at Kasur is concerned, I believe there was some man group who was his political opponent, or within the party they were opposing each other. They were named in the second FIR, which was at Islamabad. None was Have named. you read Justice Shafiur Rahman's report? Yes, sir. मैं आ रहा हूँ सर, वो सारी Okay, ठीक है। पता है क्या फिर उसमें उन्हें जिक्र किया। सर मैं पढ़ दूंगा वो सारा, वो मेरे पास है। मैं चाहता हूँ जरा आप थोड़ा सा चीजें आहिस्ता आहिस्ता सबकी बात क्लियर होती जाए कि है क्या केस। वो मेरे पास है, मैं जब भी कहेंगे तो अभी पढ़ देता हूँ, मगर वो फिर सीक्वेंस टूट जाएगा। Now I am referring to the second part of this FIR, and I will very fairly I will say this is the very good narration of the events so far as events are concerned. Your Lordship might have come across many FIR, and particularly in Punjab, we specifically attribute injuries even at night time. A fire hit in the head, B fire hit on the left leg, C fired hit in the chest. So this is the routine FIR, but in this FIR, very natural relations of the event, which has been described.
and this has not been disputed anywhere. The fact that this incident took place at Shadman Chowk has not been disputed. The fact that car was being driven by Kasuri Saab has not been disputed. The fact that in car his father, his mother and Khala were sitting has not been disputed. The fact that his car was fired at has not been disputed. Fact that his father received the firearm injury, it has not been disputed. The only thing is that he says he received a number of bullet injuries. वो मैं सर उसको भी There is only one. Did any of the other occupants receive any? No, none. But sir, even I will give this allowance to him, because at that time when your father is hit and you are narrating the events, so he could not see how many injuries on his head. Obviously blood was oozing, so that is not much important. If he said he received injuries and there is only one injury, I think this is not important point of the case. अगर इसी ग्राउंड पे आप बेल देते थे पता नहीं मैं क्या करता नहीं। और दूसरा अब इसकी एक और एस्पेक्ट देखिए। In this FIR, so far as firing is concerned, none is named. As my lord was asking the question, who was named in the FIR, none is named in the file. What weapon was used, it has not been described. How many fires were shot, it has not been mentioned. So these are the salient feature of this FIR, but I will call it, again I will say, it's a very natural narration of the event, which is expected from a person who is in such a situation. So it is based on the suspicion that whatever he said in the National Assembly. No, that is the subsequent. He said what he said in the National Assembly. He just gave an incident of the National Assembly. He has not referred to any conspiracy. No direct allegation. No allegation. But I don't want to much time spend on this aspect of the matter, because it's not that relevant and that material. And even in my assessment, the whole evidence of Kasuri Saab is not relevant. मगर धमकी तो इनको दी कि इनको ये मुझे पसंद नहीं है। नहीं वो बात तो ये ना कि हमने तो ये देखना है जनाब। बात है FIR में ऐसा लगता है मैं आज करने लगा हूँ। नहीं आप बात सुन लीजिए, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि अटैक इन पे होना था। इन्होंने लिखा है मैं लेफ्ट हैंड ड्राइव कार थी। नहीं राइट हैंड लिखा है, राइट हैंड लिखा है, लेफ्ट नहीं लिखा। वो अटैक रात को 12 बजे जनाब, वो फिर लेफ्ट राइट का नहीं पता चलता। और दिस वाज 74, कुछ स्ट्रीट लाइट का भी इतना कॉन्सेप्ट नहीं है, वो ऐसा इशू नहीं है। मैं क्योंकि माय लॉर्ड हैज सेड कि जी टाइम का मसला है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपका जो वक्त है ना जी इसको हम बाद में डील कर लेंगे। फिर वो इन्वेस्टिगेशन मैंने बता दिया। अब वो अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको पेज भी बता देता हूँ। ये पेज है 39, पुलिस फाइल नंबर 6 आपके पास है जी। और एक तो पुलिस फाइल है ना जी जो हाथ से लिखी है, ये बेटर कॉपी है। निकालो पेज 39। ये चलान है? नहीं सर, ये वो चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन की मैं बात कर रहा हूँ। पहले मैंने कहा ना जी कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन लोकल पुलिस करती रही, फिर उसके बाद ये CIA को ट्रांसफर हो गई। मिल गया जनाब को पेज? पढ़ूं मैं? नहीं जरूरत है आपको पता नहीं पढ़ना चाहते तो ठीक है। नहीं मेरा मतलब आपने कह दिया तो ठीक है। इसमें सिर्फ ये है, मैं खास बात है तो बता दें। मैं सिर्फ ये अर्ज करने लगा हूँ कि इसमें ये लिखा है कि ये ऑर्डर फलां के तहत ये CIA को ट्रांसफर होगी। अगर जनाब ने पढ़ लिया तो ठीक है, मैं नहीं पढ़ता। ठीक है। बेसिकली आप चालान पढ़ना चाहते हैं? अगर चालान, वो चालान से पहले मेरी गुजारिश ये है, अब बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं जनाब को बताने लगा हूं कि ये क्लोज कैसे हुई, किसके ऑर्डर से हुई और किस तरह री इन्वेस्टिगेशन हुई। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड योर लॉर्डशिप हैज रेज्ड द क्वेश्चन कि in what circumstances this investigation, re-investigation started. This is a very important point. I need your kind indulgence on this point. It's a very, very important point. No, sir. Your Lordship kindly see
this close of investigation, closure report prepared under Rule 25.5557, 25.57 and Police Rules 1934. The form is 25.572 and it was prepared by Abdul Hamid, and that is available on page 105 of this file number 6, the same file. जी मिल गया सर? मिल गया। ये पढ़ूं सर? फॉर्म 105 ये तो मुझे FIR नजर आ रही है। नहीं सर, नहीं FIR नहीं है। फॉर्म रिपोर्ट खात्मा ज़ेर दफा 173। वो 173 में ये रिपोर्ट वही बनती है। बेसिकली रूल इसका डिफरेंट है, मगर उसकी बॉडी में वो सारी बातें लिखी हैं जो मैं कह रहा हूँ। ठीक, अगर इजाजत दे तो मैं पढ़ लूँ इसको। अगर आप समझते हैं पढ़ना चाहिए, बड़ा जरूरी है। पढ़िए पढ़िए। इसमें नहीं मिलेगा सर, ये पुलिस रूल्स डिफरेंट है। दोनों हम देख रहे हैं। आप मैं दोनों बातें 173 है रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन की। वो क्लोजर रिपोर्ट के लिए एक पर्टिकुलर सेक्शन है। आपकी आंखें बहुत तेज है, मैं समझा आप देख नहीं सकते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। जी आइए सर, इसको पढ़ लेते हैं। ये मैं रेलेवेंट पढ़ूंगा सर जी। पहला तो ये है ना, ये जो पहला पैरा है ये मैं नहीं पढ़ता क्योंकि ये सारा FIR है। अब मैं सेकंड पढ़ना चाहूंगा। हर पहलू पर तफ्तीश होती रही। आज तक की तफ्तीश से मुकदमा हाजा में कोई सुराख मुल्ज़मान ना मिला है। मुकदमा हाजा में अब तक कोई मुल्ज़म गिरफ्तार ना हुआ है। मुकदमा हाजा काफी दरीना हो चुका है। दरीना मतलब सर पुराना, आई बिलीव इट्स पर्शियन वर्ड्स, दरीना हो चुका है, जिसमें सुराख बरारी का कोई फिलहाल इम्कान ना है। मुकदमा को मजीद ज़ेरे तफ्तीश रखना महज बेसूद और तोसीउल वक्ती है। लिहाजा मुकदमा हाजा में रिपोर्ट कायमा बसीगा अदम पता, ये है जनाब वो जो बसीगा अदम पता, नो क्लू नो ट्रेस, मुरतब करके बमराज समात अरसाल है। बाद मलाजा मिस्र मुकदमा हाजा को अदम पता दाखिल दफ्तर फरमाए जाने का हुक्म तहरीर किया जाए। ये तफसील लिखी है सर। और उसके बाद ये आपके लेफ्ट हैंड साइड पे ये इसके दक्षत हैं DSP और उसके नीचे SP के हैं 24/4/76 को। अब 1.5 लीटर वाला पैक बन गया 2 लीटर पैक 500 ml एक्स्ट्रा के साथ सिर्फ 200 रुपए में। इफ्तारी का मजा कोका कोला के साथ। क्या है डब का क्या है
सुप्रीम कोर्ट से पीसीओ का होता आया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसी ऑर्डर का? हाँ, इसी ऑर्डर में लिखा है एट पेज 43 सर, पेज 43 पैरा 14। वॉल्यूम बिफोर यू कम टू इट, ये अगर आप टाइटल देखिए पेज 35 पे, इसमें दो एप्लीकेशंस का दो हैं, दूसरी भी है। दूसरी कौन सी है? 933 तो वो वाली है, 933 में उन्होंने वो तो रिक्यूजल वाली है। हाँ, वो कोई, और दूसरी वाली कौन सी है? ये एक तो ये है ना जिसमें उन्होंने इनका प्रेजुडिस और हाँ, वो तो ठीक है। दूसरी कौन सी? दूसरी में क्या इशू था? हाँ, वो था कि एक्टिंग चीफ जस्टिस जो है वो हाई कोर्ट को वो नहीं कंट्रोल कर सकता, दिस शुड बी परमानेंट चीफ जस्टिस, मगर वो कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं। ये इस रेफरेंस से ये ट्रांसफर के, मैं इसलिए इसको स्किप कर रहा हूँ, मगर ये बड़ा इंटरेस्टिंग पैरा है जो मैं पढ़ना चाहता हूँ। जी पढ़िए, पेज बताएं। जी पेज 43 सर, पार्ट मिलॉट पार्ट 9। वो एक से इधर आ रहा है, आ रहा है, पार्ट आ रहा है। बड़ा स्कैटर्ड हुआ है सर, कोई उधर आर्डर है, कोई जब तक पढ़ते हैं वो बाकी जनाब नहीं, वो आप पढ़ेंगे तो हम सुन लेंगे, ना भी आए ये सबके पास है। जी जी प्लीज स्टार्ट। सबके पास नहीं पढ़ते तो हम सुनते रहते हैं ना जब तक आ जाएगी। I have no objection sir. आप सही पढ़ेंगे यकीनन। I will obey every command of नहीं जी प्लीज प्लीज। Sir, the next challenge is to the oath subscribed to by the acting Chief Justice at the time of assumption of his office. The only objection is that the acting Chief Justice did not subscribe to the oath as required under Article 194 of the Constitution. This objection cannot be sustained in view of the High Court Judge's Oath of Office Order 1977 within bracket President's Order Post Proclamation number so and so. The oath of office prescribed therein is administered to the acting Chief Justice under Clause 5 of the High Court Appointment of Acting Chief Justice Order 77. A similar oath is required to be administered to all the judges of the Supreme Court by virtue of Supreme Court Oath Order 77 enforced on the 22nd of September 77. All the judges of Supreme Court, including His Lordship Chief Justice, have already subscribed to such an oath. The argument of learned counsel, if allowed to prevail, will be chaotic for the administration of justice in the country, since it will lead to the result that there is no superior court in Pakistan. It's a very good explanation for taking oath under PCO. But there was no, but probably the judges realized that there was no superior court in Pakistan. नहीं वो पता नहीं अब क्या कहते हैं, मुझे तो उनका यही समझ आया कि वो कहते हैं कि हमने ओथ ना लिया तो जज ही कोई नहीं, कोर्ट ही कोई ना हो। बड़ी बात है वैसे। बहरहाल एनीवेज, अब दूसरा दिखाओ, दूसरा पेज 55। नहीं मगर मेरिट्स पे बताएं। मैं उसी पे आ रहा हूँ सर, ये तो मैंने सिर्फ आपको बताया, आपने कहा था कि वो दूसरी एप्लीकेशन क्या है। इट्स अ गुड हिस्ट्री लेसन, बहुत अच्छे। इफ नथिंग एल्स। मलिक साहब ये बताएं कि ये हाई कोर्ट ने कौन सी जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज की, कौन किस केस में? इसी में ट्रांसफर में सर 526। अभी तो मैं पढ़ना है उसको अभी, क्योंकि मैं वो आई एम ओबेइंग द डायरेक्शन, वो मैं उसको पढ़ूंगा। साथ ही फिर ये भी बता दें बाद में क्वेश्चन करने में, स्टेट मस्ट बी थ्रू समबडी। स्टेट का मतलब सर यही होता है कि जैसे हम बेल पिटीशन फाइल करते हैं ना, हम अपील फाइल करते हैं, somebody is convicted, so that is ABC versus state। नहीं वो नहीं, वो लिखें ना लिखें, इतना है बात जगहों पे शायद है ऐसा, बट वो स्टेट का मतलब ही यही है कि वो प्रोसिक्यूशन है, वो कोई इतना सीरियस बात नहीं। अब मैं 35 दो। अब आप मेरिट वाली बात बताएं, वो मेरिट वाली बात कैसे डील कर रहे हैं? चलना मेरिट पे। अब इसमें सर प्राइवेट कंप्लेंट का भी जिक्र आ जाएगा, नोटिस क्यों नहीं हुआ वो भी आ जाएगा, ताकि दोनों चीजें जो आपने पूछी हैं वो क्लियर हो जाएंगी। सर पेज 55 सर, पार्ट 9 के जी पार्ट है जी 9 जी 55 पेज पे जी 55 पेज पे पैरा सर इसका है 31 जी। एक कंप्लेंट टिश्यू देना, एक कंप्लेंट अगेंस्ट 55 against
Mr. Z. Bhutto and 19 other accused person under section 120B 119. नहीं skip this. हाँ जी. सर ये बड़ा जरूरी है सर. ये थोड़ा प्लीज इसको देख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये. मैंने तो पढ़ लिया जी. कुछ खास बात है तो बताएं. सर अगर इजाजत दे तो मैं पढ़ लूं तो फिर बता दूं तो ज्यादा. बताइए. सुन ले सर, कुछ नहीं होता सर, बड़ा जरूरी है. आई एम इन अ वेरी डिफिकल्ट पोजीशन ऑफ ट्राइंग टू get things completed also. ये बस नहीं हो जाएगा सर. देखिए वो उससे बेहतर है कि वो, अगर मैं ड्यू रिस्पेक्ट में कहूंगा कि अगर जल्दी में कुछ चीज रह गई तो फिर वो सारी जिंदगी का मसला है. जैसे तो आप इसको सुन लें. मैं तैयार हूँ, आप रात 12 बजे तक मुझे रखें, मैं तैयार हूँ. अच्छा, मैं 12 बजे तक भी बहस करने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई इशू नहीं. एक कंप्लेंट सर मैं पढ़ा था अंडर सेक्शन में स्किप कर देता हूँ. वाज फाइल्ड बिफोर ए मजिस्ट्रेट एट लाहौर बाय मिस्टर इफ्तिखार अहमद तारी द कंप्लेनेंट अगेंस्ट द एप्लीकेंट सो एंड सो. अब मैं इसमें वो आ जाता जो कंप्लेंट इन्होंने की है. मियां अहमद तारी ये कौन आ गया? ये कुछ दूसरे थे जी. ये बेटा ये है The complaint of Ahmed Raza Kasuri, para 32. करना क्या चाहते हैं जी. Was referred to a division bench consisting of Mr. K.M. Samdani J and Mazrul Haq J. अब यहाँ मैं पॉज करूंगा और मैं सबमिट करूंगा कि वाई नोट this was not issued to the accused. Had it been issued, they could say, sir, if you want to transfer this case, so send it. The case where the complaint regarding the same incident is pending. So that was avoided. Because those two honorable judges, I believe the acting Chief Justice was not inclined to include them in the bench. So that is, अब इसको आप क्या कहेंगे? बायस कहेंगे, टैक्ट कहेंगे, क्लेवरनेस कहेंगे? आप क्या कहेंगे? मैं कुछ नहीं कहूंगा. अब आप इसको कुछ कहते हैं आप? सो मैं कहता हूं दिस इज ए क्लेवर मूव. जी सर, ये क्लेवर चीज है ना जी. ये बायस से आगे बात है. बायस तो एक चीज है ना, आपका एक एक्ट है, कुछ स्किप कर गए. ये तो आप किस तरह कर रहे हैं? आप कह रहे हैं वायलेशन ऑफ ड्यू प्रोसेस है. वायलेशन भी नहीं है. वायलेशन तो बड़ी चीजें होती हैं कि मुझे कॉपी चाहिए.